Hello everyone, I am Neha Singh. Welcome to the Current Affairs Bulletin. Today we are not only represent the current affairs but will also discuss the questions related to the current affairs and which are important for your upcoming exams. And we have the GS Genius Dr. Vipin Goyal with us who will discuss the questions at the end of this video. At the highlights, Enforcement Directorate ED has conducted searches on 300 shell companies. UP CM Yogi Adityanath has ordered probe on Gomti Riverfront project. India's ace shuttler PV Sindhu won Indian Open title. PM Modi inaugurated the country's longest 9-kilometer road tunnel in Jammu and Kashmir, built with Rs 2500 crore. Indian Institute of Science, Bangalore bagged the first rank amongst top educational institutions of India. The Indian scientists have observed that there would be massive planet which orbits the binary star named as MXB 1658 and 298. West Bengal CM Mamata Banerjee announced the formation of new district Jhargram. WhatsApp is keen to start digital payment services in India. Union government to set up Rail Development Authority RDA. SEBI has released its latest survey based on investment and savings. Union government allowed to import duty-free raw sugar of up to 5 lakh tons. India-Russia deal on nuclear power reactor Kudankulam Unit 1 has been sealed. WHO celebrates World Health Day on April 7th as the Global Health Awareness Campaign. Review of RBI's first bi-monthly policy for the year 2017 and 18. Marathi film Kasa won the Best Film Award in the 64th Annual National Film Awards. US attacked Syrian airbase with its destroyer missile. India-Bangladesh signed 22 agreements. CRPF celebrates Whaler Day on April 9th. Nagarjuna Sagar Dam will be the first automated dam in India. India-Mongolia started its bilateral military exercise in Mizoram. PM Modi inaugurated a digital exhibition on Mahatma Gandhi's works known as Swachhagrah on 10th. Enforcement Directorate ED has conducted searches on 300 shell companies. The Financial Investigation Agency Enforcement Directorate ED has conducted searches on 300 shell companies across 16 states on a suspicion of money laundering and violation of Foreign Exchange Management Act 1999 FEMA. ED found that in some cases more than 50 companies were registered on the same address and many also having dummy directors. Shell companies are those companies which do not have any business operations and also not having any significant assets. UP CM Yogi Adityanath has ordered probe on Gomti Riverfront project. CM has taken this step after he received the report that only 60% of the work was complete, depleting 90% of the funds allotted for it. He also found that funds were utilized for the beautification of the riverfront for installing fountains and laying pavements instead of cleaning the river. A retired High Court judge will be the head of probe committee which will review the whole work and submit the report within 45 days. Gomti is the tributary of Ganga which originates from Gomti Tal or Fulhar Jheel near the place named Madhutanda in Pilbhit district UP. The tributary meets Ganga in Saidapur near Varanasi UP. India's ace shuttler PV Sindhu won the Indian Open title. India's ace shuttler PV Sindhu won Indian Open title held in New Delhi against her competitor Carolina Marin of Spain by 21-19 and 21-16. This is the first time Indian Open title of PV Sindhu and her second Super Series title after China Open. PM Modi has inaugurated the country's longest 9-kilometer road tunnel in Jammu and Kashmir built with Rs 2500 crore. This tunnel connects Chenani and Nashri towns of the state. It is an all-weather tunnel which reduces the distance between two towns by 37 km. Jammu and Kashmir CM Mehbooba Mufti and Governor N.N. Vora were also present during the inauguration. Indian Institute of Science Bangalore bagged the first rank amongst top educational institutions of India. Indian Institute of Science Bangalore bagged the first rank in the list of top educational institutions of India across all disciplines in the survey conducted by National Institutions Ranking Framework NIRF 2017. IIT Madras comes at the second spot in the list. To everyone's surprise, IIM Ahmedabad came on the 17th rank, whereas the rest of the IIMs were not even in the rank of top 20 list.
The Indian scientists have observed that there would be massive planet which orbits the binary star named as MXB 1658 and 298. The scientists of Raman Research Institute, Bengaluru and Delhi University have observed that there would be massive planet which orbits the binary star named as MXB 1658 and 298. They have carried out this observation by using X-ray technique. This technique is a new way to study and detect binary stars and exoplanets. Exoplanets are those planets which orbits the stars outside the solar system, whereas binary stars are the pair of two stars revolving around each other in a pair. West Bengal CM Mamata Banerjee announced the formation of new district Jhargram. It becomes the 22nd district of West Bengal, which was earlier a Maoist hit region. It was earlier come under Paschim Medinipur district. Earlier in February, the state government has formed Kalimpong, its 21st district, which was carved out of Darjeeling district. WhatsApp is keen to start digital payment services in India. World's largest online instant messaging app has published job advertisement regarding this business on its website and is looking for the candidates with technical and financial background having good understanding of Unified Payments Interface and Bheem Payments app. Unified Payment Interface UPI is the Union's government digital payment platform which links all the banks under one roof. It is launched by National Payment Corp of India NPCI and regulated by RBI. Union Government to set up Rail Development Authority RDA. Rail Development Authority will recommend passengers' fares, performance on standards for rail operations and on creating level playing policy for private sector participation to the Rail Ministry. RDA will work under Railway Act 1989 and its headquarters will be based in Delhi. Settings of this independent rail regulator will improve passenger services and enhance transparency and accountability. It will also indirectly improve railways freight business by rationalizing the passengers' fares. SEBI has released its latest survey based on investment and savings. The survey was conducted and analyzed by the global primary research firm Nielsen. The survey was started in 2015 and completed last year, but the SEBI presents its results yesterday. The survey was conducted for both urban and rural households. The survey says 95% of all households prefer bank deposits for their investment, which makes it number one among all investment avenues. The other top 4 choices are life insurance, gold and other metals, post office and real estate. Union government allowed to import duty-free raw sugar of up to 5 lakh tons. To check price rise and shortfall in sugar production, the Union government has taken this initiative. All the ports will be given fixed quota which will be decided by Directorate General of Foreign Trade DGFT. India is the second largest producer after Brazil and is the world's largest consumer of sugar. Our neighboring country China is on the 3rd rank. India-Russia deal on nuclear power reactor Kandakulam unit has been sealed. India has taken over the Kandakulam Unit 1 from Russia after the agreement was signed between them. The plant was established in Tamil Nadu by Russian Atomic Energy Corporation named Rosatom. On the Indian side, the agreement was signed by government-owned company Nuclear Power Corp of India Limited NPCIL. WHO celebrates World Health Day on April 17th as the Global Health Awareness Campaign. This year, it is done to help the people battling with depression. It urged people to come up and talk about depression. Theme for this is Depression, Let's Talk. According to WHO survey, 5 crore Indians and 300 million worldwide are suffering from depression. Review of RBI's first bi-monthly policy for the year 2017 and 18. RBI has kept the repo rate unchanged at 6.25%. This is also known as benchmark rate or policy rate. But the RBI decreased the reverse repo rate by 25 basis points, which making it 5.75% from the previous 6%, which makes the policy corridor narrower. The 6 members Monetary Policy Committee of RBI is responsible for making this bi-monthly report, said that this decision is consistent with the committee's objective of achieving the retail inflation at 4% in the medium term.
Marathi film Kasa won the Best Film Award in the 64th Annual National Film Awards. Among the awards, Akshay Kumar won its first national award as Best Actor for his drama film Rustam, and Surbhi Lakshmi won the Best Actress award for working in Malayalam movie. Another Marathi film, Ventilator, has won the hearts of jury and bagged award for Best Direction. The director of this movie is Rajesh Maposkar. To check the full list of winners, you can visit our blog, that is makemyexam.in. US attacked Syrian airbase with its destroyer missile. The attack was done after the US and European nations claimed Syrian government was allegedly attacked its terrorist rebellion Idlib province with poisonous sarin gas, which amounts to killing of almost 90 people. US attacked Syria with Tomahawk missile from its guided missile destroyer USS Porter from Mediterranean Sea. However, Syria refused to accept the allegation. India-Bangladesh signed 22 agreements including $500 million of defense cooperation, cybersecurity, civil nuclear energy, extending line of credit of amount $4.5 billion, the biggest ever by India to any other nation, etc. The agreements were signed in the presence of Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi counterpart Sheikh Hasina. The new trans-border rail connectivity with Bangladesh was also inaugurated between Khulna-Kolkata, named as Maitri 2, along with the trial run of Kolkata-Khulna-Dhaka bus service. CRPF celebrates Valor Day on April 9th. Valor Day is also known as Shaurya Divas in Hindi, is celebrated to commemorate the victory of a handful of CRPF soldiers against a full-fledged Pakistan army contingent on this day in 1965 at Sirdar Post and Tuck Post in Rann of Kutch, Gujarat. CRPF is one of the 5 central armed police forces of India under Ministry of Home Affairs. Nagarjuna Sagar Dam will be the first automated dam in India. The dam is situated on Krishna River at Andhra-Telangana border. The automation will be done by the funds received from World Bank, which will open the water gates of the dam automatically during the times of floods, and will also release moderate amount of water automatically by using the real-time flood forecast in anticipation of receiving more water. India-Mongolia started its bilateral military exercise in Mizoram. The joint military exercise is named as Nomadic Elephant and is presently going at Varengte from 5th to 18th April. This is the 12th joint military exercise between the two nations. PM Modi has inaugurated a digital exhibition on Mahatma Gandhi's works known as Swachhagrah on 10th of this month. It was done to commemorate the 100th anniversary of Gandhi's first Satyagrah in India on April 10, 1917, done at Champaran in Bihar. It is also known as Champaran Satyagrah, which was done to dissolve the plight of indigo farmers under British planters. So here we end up with Current Affairs Bulletin. And now we have Dr. Vipin Goyal with us to discuss the questions based on today's bulletin. Thank you. Hello friends, I am Dr. Vipin and today we will discuss the question answer part of this bulletin. So the first question is the term shell company commonly seen in news is, the first option is the company which is not registered under company law, and the second option is the legal entity which is indulged in maritime fishing activities, and the third option is the legal entity without active business operations used to avoid taxes, and the fourth option is the illegal company indulging in human trafficking. So the shell companies वो होती हैं जो कभी भी एक्टिव बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करती, और ये वो कंपनीज होती हैं जाके एंड में वो जो अपना टैक्स बचा सकें. सो द ऑप्शन इज सी, द लीगल एंटिटी विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस used to avoid taxes. So the second question is, in which year the Prevention of Money Laundering Act was enacted? First option is 2000, second option is 2002, third option is 2012, fourth option is 2015. पहले तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता होना चाहिए. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? अगर सपोज करो कि अगर हमारे पास कुछ इलीगल मनी है और अगर हम उसको फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफ़र करके इंडिया में लेके आएँ और ऐसे लगे कि वो एक लीगल सोर्स से आ रही है, तो उसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. इसके लिए हमने एक एक्ट बनाया हुआ है, डेट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और वो हमारे ईयर 2002 में आया था. सो द ऑप्शन इज सेकेंड, बी ऑप्शन 2002.
Clear? So the third question is, which of the following river is not a tributary of river Ganga? Option A is Godavari, option B is Yamuna, option C is Gomti and option D is Kosi. पहले तो हमें ट्रिब्यूटरी के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरी होता क्या है कि अगर एक छोटी रिवर बड़ी रिवर में जाके मिले तो उसको हम उसकी कहते हैं ट्रिब्यूटरी। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारी जो गोदावरी रिवर है वो पहले तो हमें साउथ में जाती है और रिवर गंगा जो है वो नॉर्थ साइड की हमारी रिवर है। तो गोदावरी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम दक्षिण गंगा कहते हैं, तो हमारी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी नहीं है? गोदावरी। क्लियर? सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, इंडियन बैडमिंटन चैंपियन पीवी संधू won Indian Open Championship by winning the final from Carolina Marin. The world number 1 badminton player Carolina Marin is from which country? First option is Switzerland, second option is Italy, third option is Spain and fourth option is France. So the Carolina Marin is from Spain country. Clear? So the fifth question is, who becomes the first Indian badminton player to win Open Championship title by defeating world number 1 player in the finals? The first option is PV Sindhu, second option is Prakash Padukone, third option is Saina Nehwal and fourth option is Parupali Kashyap. So the answer is PV Sindhu. Clear? So sixth question is, India's longest Chenani Nashi road tunnel in J&K is situated on which national highway? First option is NH44, second option is NH first A, थर्ड ऑप्शन इज NH22 एंड डी ऑप्शन इज NH33। चेनानी नाशी रोड टनल जो है वो 9 किलोमीटर की है J&K में और 2500 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। तो ये जो आपका रोड टनल है ये कहाँ से कहाँ तक है? चेनानी से नाशी तक 9 किलोमीटर एंड विच नेशनल हाईवे? NH44। द ऑप्शन इज ए, NH44। Clear? And the next question is, which Indian college ranked number 1 in countrywide government ranking of educational institutions? First option is Loyola College Chennai, second option is Shri Ram College Delhi, C option is Miranda House Delhi and D option is St. Stephen's College Delhi. So the option is C, Miranda House Delhi. Clear? So the eighth question is, what are the binary stars? First option is, it is a set of two stars of equal masses orbiting around each other. Second option is, it is a set of two black holes approaching towards a common star. And a third option is, it is a set of two stars in which one is less massive star and another is either black hole or neutron hole. And the fourth option, it is a set of two stars in which one is a neutron star and another is a black hole. First of all, binary stars से हमें पता लग रहा है कि binary मतलब two, दो स्टार्स के बारे में बात हो रही है। तो बाइनरी स्टार्स किसे कहते हैं हम? इट इज ए सेट ऑफ टू स्टार्स ऑफ इक्वल masses orbiting around each other. The first option is the answer. Clear? And the ninth question is, in which of the following Indian states Jhargram was formed as the 22nd district in that particular state? So the option are Telangana, second option is Odisha and third option is Jharkhand and D option is West Bengal. So the answer is D, West Bengal. Clear? So the next question is, which instant messaging app can also be used to pay online bills and payment? First option is WhatsApp, second option is Beam, third option is WeChat and fourth option is LinkedIn. Clear? पहली बात तो आजकल जितना भी जैसे हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है तो डिफरेंट ऐप्स लॉन्च हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिजिटली कनेक्ट किया जाए। तो जो अभी इन्होंने ऐप लॉन्च की हुई है हमारी व्हाट्सएप, उन्होंने ऑनलाइन बिल एंड पेमेंट के लिए सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं ये। तो ऑप्शन इज फर्स्ट व्हाट्सएप। क्लियर? And the next question is, which committee set up for mobilization of resources for major railway projects and restructuring of railway ministries in 2015? First option is AP Shah Committee, second option is Vivek Debroy Committee, C option is Jeevan Reddy Committee and fourth option is Iradi Committee. Clear? पहली बात तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। पहली बात तो इसमें ये करने वाले क्या हैं? एक्चुअली जितने भी हमारे पास मनी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, उसको सही ढंग से मोबिलाइज किया जा सके ताकि नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकें। और अगर कुछ भी ख़राब चल रहा है हमारी मिनिस्ट्री में, लाइक फॉर एग्जांपल कि कुछ हमारी रेलवे लाइंस ठीक नहीं हैं, उनको दोबारा से बिल्डअप करना है, तो उनके लिए कमेटी बनाई है, डेट इज सेकंड ऑप्शन विवेक देब्रॉय कमेटी। Clear? So the next question is, which research firm carried out the investment survey for the capital market regulation body SEBI?
फर्स्ट ऑप्शन इज ओपिनियन आउटपोस्ट, सेकंड ऑप्शन इज एसेंशियर, थर्ड ऑप्शन इज विंडेल रिसर्च एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नियल्सन। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी कि हमारे शेयर मार्केट को हैंडल करती है। तो जो आज इस बार इन्होंने एक फर्म ने इन्वेस्टमेंट सर्वे लॉन्च किया है, तो वो कौन सी फर्म है हमारी, डी ऑप्शन इज नियल्सन। Clear? So the next question is, according to latest survey by Security and Exchange Board of India, which of the following investment avenue are preferred by the rural household in India after bank deposit? First option is life insurance, second option is gold, third option is post office deposit and the fourth option is bonds. हमने हमारे इंडिया में बैंक डिपॉजिट के बाद लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, और मेनली रूरल हाउस होल्ड। सो द ऑप्शन इज ए लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया, सेकंड ऑप्शन इज चाइना, थर्ड ऑप्शन इज ब्राज़ील, फोर्थ ऑप्शन इज यूएस। हमें पता है ब्राज़ील जो है हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, सो ऑप्शन इज सी ब्राज़ील। The next question is, which of the following statement is true about sugar production? First option is India is the largest producer and consumer of sugar in the world. Second option is Brazil is the third largest sugar producer in the world. C option is China ranked second in the sugar production and the fourth is Thailand ranked 4. पहली बात तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम लेके चलें, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड, ये गलत है। द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, कंज्यूमर ऑफ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, ये क्लियर सही है हमारे पास। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, इससे पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्लियर? एंड इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है एंड सी ऑप्शन चाइना रैंक सेकंड इन द शुगर प्रोडक्शन, ये रॉन्ग है। चाइना जो है वो पीछे है, इंडिया का सेकंड नंबर है। द थाईलैंड रैंक 4, ये ऑप्शन हमारे पास राइट है, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज द कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन? First option is Kerala, second option is Tamil Nadu, third is Karnataka and the fourth option is Andhra Pradesh. कुन्नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारा रशिया की हेल्प से लग रहा है, वो कहाँ पे लग रहा है, तमिलनाडु में। सो द सेकंड ऑप्शन इज तमिलनाडु इज द राइट आंसर। Clear? So the next question is, World Health Day is annually celebrated on? First option is April 7, second option is March 31, third option is January 29 and the last option is September 24. पहली बात तो वर्ल्ड हेल्थ डे हमें पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है डेट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं, डेट इज़ स्विट्ज़रलैंड जिनीवा। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हमारा अप्रैल 7 को मनाया जाता है, तो आंसर इज अप्रैल 7। The first option is the right answer. Clear? So the next question is, what is the theme of World Health Day in 2017? First option is depression, let's talk. Second, halt the rise, beat diabetes. Third option is make every mother and child count. The next option is mental health, stop exclusion, dare to care. वर्ल्ड हेल्थ डे का जो इस बार थीम था डेट इज डिप्रेशन लेट्स टॉक। क्लियर? सो द ऑप्शन इज ए डिप्रेशन लेट्स टॉक। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पॉलिसी रेट? फर्स्ट ऑप्शन इज रेपो रेट, सेकेंड ऑप्शन इज रिवर्स रेपो रेट, थर्ड ऑप्शन इज बैंक रेट एंड फोर्थ इज मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। पहले तो हमें पॉलिसी रेट के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिसी रेट जो होता है, पॉलिसी रेट क्या होता है, किसी भी सेंट्रल बैंक का लैंडिंग रेट। अब सेंट्रल बैंक कौन है हमारे इंडिया में? सेंट्रल बैंक इज द आरबीआई। सेंट्रल बैंक इज आरबीआई एंड आरबीआई क्या है, दूसरे बैंकों को लोन देता है, ठीक है। वो किस रेट के ऊपर देता है? पॉलिसी रेट। एंड ये पॉलिसी रेट क्या करता है, शॉर्ट टर्म फंड्स की रेगुलेशन, ताकि जो आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है, मार्केट स्टेबिलिटी है, वो बनी रहे। क्लियर? सो जो हमारा ऑप्शन है रेपो रेट, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट आपको पता ही होगा, रेपो रेट होता है, दिस इज द शॉर्ट टर्म फंडिंग बाय आरबीआई टू द अदर बैंक्स और अदर कमर्शियल बैंक्स, कि जो आपके शॉर्ट टर्म फंड्स हैं आरबीआई दूसरे बैंकों को देती है, यानी कि लोन प्रोवाइड करती है फॉर द शॉर्ट टर्म। सो हियर द ऑप्शन इज, क्वेश्चन इज पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट अभी हमने डिस्कस किया है कि सेंट्रल बैंक लैंडिंग रेट के लिए बैंक्स को देता है, वो अगेन शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा?
रेपो रेट, क्लियर। सो ऑप्शन इज ए, रेपो रेट इज द आंसर, क्लियर। बट हम यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग रेट भी डिस्कस करते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, बिल्कुल एज इट इज सेम रेपो रेट का, ठीक है। लाइक जैसे रेपो रेट में क्या है, शॉर्ट टर्म फंडिंग बाय द सेंट्रल बैंक टू द अदर बैंक, तो रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा आ जाएगा। कहने का मतलब जिसमें बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आपके आरबीआई को लोन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, क्लियर। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है कि जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट किया जाता है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द बैंक्स एंड सेकंड इज द आरबीआई, क्लियर। तो बैंक रेट है आरबीआई, द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड बैंक रेट, क्लियर। मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग रेट और हम इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कह सकते हैं। लाइक जैसे बैंक में हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स आते हैं जिसमें हम मनी के रिलेटेड बात करते हैं, उसमें एक टर्म आती है एसएलआर। एसएलआर इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसमें क्या होता है कि बैंक्स ने अपने पास कुछ पैसे रखने होते हैं लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, एंड व्हाट आर द लिक्विड एसेट्स, लाइक जो भी चीज़ आपके कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स, क्लियर। तो अगर आपको बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़े फॉर द वन डे एंड कुछ भी ऐसे और ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या करेगा बैंक, आरबीआई से परमिशन लेगा और आरबीआई क्या करेंगे कि जो आपके पास एसएलआर पड़ा है आप उसमें से पैसे यूज़ कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग रेट, क्लियर। So the next question is, monetary policy committee was formed on whose recommendation? The first option is Raghuram Rajan, second option is Urjit Patel, third is Nachiket Moore and fourth is Bimal Jalan. So the answer is Urjit Patel. हमें पता है आरबीआई के गवर्नर कौन है, हमारे उर्जित पटेल, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी यही बनाएंगे। एंड मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय द आरबीआई, क्लियर। मॉनेटरी मतलब मनी, पॉलिसी मतलब अगेन पॉलिसी, मनी के रिगार्डिंग पॉलिसी, ऑब्वियसली बात है मनी के रिगार्डिंग पॉलिसी कौन बनाएगा, हमारी आरबीआई, क्लियर। तो उसको कौन बनाएंगे, हमारे आरबीआई के गवर्नर, दैट इज उर्जित पटेल, एंड उर्जित पटेल इज द 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई, clear. And the next one is the Marathi film Kasa, which won the 64th national awards in best film category, is based on which theme? The first option is depression, second cancer, third is farmicide and fourth is female infanticide. So the answer is depression, clear. The next question is, what is the sarin gas? Sarin gas, पहली बात तो sarin gas होती क्या है, सारिन गैस क्या करती है, दिस इज अ अनस्टेबल गैस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट इज़ ए पॉइजनस। ये क्या करती है, हमारे ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है, कर लेती है, और इसके बाद जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोक देती है, कहने का मतलब चोकिंग कर देती है, क्लियर। सो द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ हाईली पॉइजनस अनस्टेबल गैस विच कॉज choking, and second option is it is a hydrocarbon gas which can be used in place of LPG for cooking, and third is that it is a petrochemical gas which is byproduct of shale gas, and the fourth option is it is a newly found chemical which can be used as a rocket fuel. So option से हमें clear है, first option it is a highly poisonous unstable gas which cause चोकिंग। अभी हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को वो कम कर देगा, क्लियर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू सर्विस विच स्टार्टेड बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश नेम्ड एज मैत्री 2, व्हाट इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी ये सर्विसेज होती हैं, लाइक जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, ये बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है ताकि उनका ट्रेड अच्छा रहे एक दूसरी कंट्री के साथ, और मतलब कह सकते हैं हम वर्ल्ड पीस बना रहे, क्लियर। सो द ऑप्शंस आर इट इज़ ए ट्रांस बॉर्डर बस सर्विस बिटवीन खुलना एंड कोलकाता, एंड इट इज़ ए ट्रांस बॉर्डर ट्रेन सर्विस बिटवीन खुलना एंड कोलकाता, एंड द थर्ड इज़ ए ट्रांस बॉर्डर बस सर्विस बिटवीन ढाका एंड कोलकाता, एंड द फोर्थ इज़ ए ट्रांस बॉर्डर ट्रेन सर्विस बिटवीन ढाका एंड कोलकाता। पहली बात तो बांग्लादेश एंड इंडिया किस जगह से कनेक्टेड हैं, कोलकाता। सो ऑप्शन हमारे पता ही हैं, ये सभी में ऑप्शन इन्होंने कोलकाता डाल रखा है। एंड द नेक्स्ट इज इसमें आंसर है हमारा बी ऑप्शन, ए ट्रांस बॉर्डर ट्रेन सर्विस बिटवीन खुलना एंड कोलकाता, क्लियर। सो द फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक ही अपने करंट अफेयर्स का सेशन डिस्कस किया है हमने। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।